chapter number 4, part 1, reconstruction of partnership. When we reconstruct the whole form, it is called reconstruction of partnership, meaning changes in partnership due to several reasons. There are main 3 reasons. First is change in profit and loss sharing ratio. Second, admission of existing partnership firm. And third, retirement or death of a partner of an existing partnership firm. There are main 3 reasons while we reconstruct partnership firm. In this chapter, we understand 2 main terminologies. First, sacrificing ratio and another, gaining ratio. First, sacrificing ratio. When there is a change in ratio of profit and loss sharing of existing partners, a portion of profit of certain partner is reduced. They get less share as compared to what they used to get before. आपको पहले जितना शेयर मिलता था अब उससे कम मिल रहा है. लाइक किसी का एडमिशन होता है, कोई न्यू पार्टनर है, वो फर्म ज्वाइन करता है, तो आपको पहले जितना शेयर मिलता था प्रॉफिट में से आपको जितना शेयर मिलता था अब उससे कम मिल रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइसिंग शेयर. पहले आपको मिलता था उससे अब आपको थोड़ा कम शेयर प्रॉफिट में से मिलता है. इट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. Another, gaining ratio. When there is a change in profit and loss sharing ratio of a partners, share of profit of some partners reduced and other partners share of profit is increased. So some partners share of profit is higher than prior one. The higher share of profit of partner is called gaining ratio. आपको पहले जितना शेयर मिलता था अब उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? गेन. आपको उतना गेन हुआ है. The formula of gaining ratio is new share minus old share. The weightage of this chapter is 3 to 4 marks. We start sum number 4. Amar and Akbar are partners of the firm, distributing profit and loss of the firm in equal proportion. अमर एंड अकबर पार्टनर्स है फर्म के और इक्वल प्रपोर्शन में वो प्रॉफिट है वो शेयर करते हैं. सो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:1. They decided to change their profit and loss sharing ratio to 3:2. New share क्या हुआ? 3:2. Under these circumstances, calculate sacrifice has been made by which partner? Sacrificing ratio का फॉर्मूला क्या है? Old share minus new share. Amar and Akbar. Old ratio 1:1. So the old share is 1/2. 1/2. 1 plus 1. So the old share 1/2. Amar and Akbar 1/2. न्यू रेशियो आपको सम में दिया गया है 3:2. सो द न्यू शेयर इज 3/5 and 2/5. Then we put formula of sacrificing ratio. ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. अमर ओल्ड शेयर है 1/2, न्यू शेयर है 3/5. 1/2 माइनस 3/5. एंड अकबर old share 1/2 and new share 2/5. So the 1/2 minus 2/5. When we do cross multiplication, 5 into 1, 5, 3 2s are 6. 5 minus 6 divided by 10. 5 minus 6 is equal to minus 1 divided by 10. सेक्रीफाइस में माइनस में आंसर आएगा तो वो क्या होगा? गेन. और गेन की फॉर्मूला में माइनस में आंसर आएगा तो वो सेक्रीफाइस. हियर we put the formula of sacrificing ratio. जो हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें sacrificing ratio फाइंड आउट करना है. माइनस में आंसर आया है -1/10. सो द गेन ऑफ अमर इज -1/10 एंड अकबर शेयर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 1/2 minus 2/5. 5 1s are 5, 2 2s are 4, 5 2s are 10. 5 minus 4 is equal to 1/10. So the sacrifice of Akbar is 1/10 and gain of Amar is 1/10. Number 5. Komal, Krupa and Karishma are partners of partnership firm. There are 3 partners. They distribute profit in the ratio of 3:2:1. Old ratio दिया गया है 3:2:1. All the partners have decided to change profit and loss sharing ratio to 5:3:2. New share is 5:3:2.
From this information, calculate sacrifice ratio. There are 3 partners, Komal, Krupa and Karishma. Old ratio 3:2:1. 3 plus 2 plus 1 is equal to 6. So the old share is 3/6, 2/6 and 1/6. New ratio 5:3:2. So the new share is 5/10, 3/10 and 2/10. Then we put sacrificing ratio का formula है old share minus new share. कोमल, कृपा एंड करिश्मा ओल्ड शेयर है 3/6 माइनस न्यू शेयर है 5/10. कृपा ओल्ड शेयर 2/6, न्यू शेयर 3/10 and Karishma old share 1/6 and new share 2/10. Now we make cross multiplication. 10 into 3 13, 30 minus 6 into 5 30 divided by 6 into 10 60. सो कोमल को गेन भी नहीं हो रहा है और सेक्रीफाइस भी नहीं हो रहा है. कृपा 10 into 2 20 minus 6 into 3 18 divided by 60. करिश्मा 10 into 1 10 minus 6 into 2 12 divided by 60. 20 minus 80 2 divided by 60. And Karishma 10 minus 12 minus 2 divided by 60. Here कृपा को सेक्रीफाइस हो रहा है 1/30 एंड करिश्मा को गेन हो रहा है -1/30. हियर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में माइनस में आंसर आए तो वो क्या है? गेन. नंबर 6. सचिन, राहुल एंड रोहित आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. Profit and loss sharing ratio is 1:2:2. All partners have decided to change profit and loss sharing ratio to 3:2:1. Calculate sacrifice ratio of partners. Exercise 6. Sachin, Rahul and Pratik. Old ratio है 1:2:2. So the old share is 1/5, 2/5, 2/5. 1 plus 2 plus 2 is equal to 5. New ratio है 3:2:1. 3/6, 2/6 and 1/6. Then we put formula of sacrificing ratio. Old share minus new share. Sachin's share 1/5 minus 3/6. Rahul's share 2/5 minus 2/6 and Rohit's share 2/5 minus 1/6. Now we put cross multiplication. 6 into 1 6 minus 5 into 3 15 divided by 30 minus 9 divided by 30. सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है, उसमें माइनस में आंसर आया तो वो क्या है? गेन. गेन ऑफ सचिन इज 9/30. Sacrifice of Rahul is 2/30. 6 into 2 12 minus 5 into 2 10 divided by 30. 12 minus 10 2/30. Sacrifice of Rahul is equal to 2/30. Sacrifice of Rohit 6 into 2 12 minus 5 into 1 5 divided by 6 into 5 30. 12 minus 5 7/30. Sacrifice of Rohit is 7/30. इन सम नंबर 4 5 6 उसमें हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट किया था, सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ पार्टनर्स. इन सम नंबर 7 वी फाइंड आउट गेनिंग रेशियो. व्हाट इज गेनिंग रेशियो? आपको पहले जितना शेयर मिलता था उससे अब ज़्यादा मिल रहा है, उससे हम क्या बोलेंगे? गेनिंग शेयर. उसका फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. Now sum number 7. Deepak, Nilesh and Pratik are partners of the firm. Profit and loss sharing ratio is 1:2:3. So the old ratio is 1:2:3, which is decided to change to 2:2:1. New share है 2:2:1. What gain is received by which partner? Now we put the formula of gaining ratio. New share minus old share. दीपक, नीलेश एंड प्रतीक. ओल्ड रेशियो है 1:2:3. सो द ओल्ड शेयर इज 1/6, 2/6 एंड 3/6. 1 plus 2 plus 3 is equal to 6. न्यू रेशियो है 2:2:1. 2 plus 2 plus 1. So the new share is 2/5, 2/5 and 1/5. Gaining ratio is equal to new share minus old share. दीपक शेयर 2/5, न्यू शेयर है 2/5.
and old share है 1/6. 2/5 minus 1/6. 6 into 2 12 minus 5 into 1 5 divided by 30. 12 minus 5 is equal to 7 divided by 30. Niles 2/5 minus 2/6. 6 into 2 12 minus 5 into 2 10 divided by 30. 12 minus 10 2 divided by 30. So the gain of Deepak is 7/30. Gain of Niles is 2/30. Pratik, new share 1/5 minus old share 3/6. 6 into 1 6 minus 5 into 3 15 divided by 30. 6 minus 15 minus 9/30. Sacrificing हमने here gain का formula है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. गेनिंग रेशियो में माइनस में आंसर आया तो वो क्या है, सेक्रीफाइसिंग शेयर. सो द सेक्रीफाइस ऑफ प्रतीक इज 9/30 एंड गेन ऑफ दीपक 7/30 एंड गेन ऑफ नीलेश इज 2/30. सम नंबर 8 इज सेम एज सम नंबर 7, तो वो आप देख लेना. नाउ वी स्टार्ट सम नंबर 9. प्रवीण, महेंद्र एंड अरविंद आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म. ओल्ड रेशियो इज 5:2:2, 5/9, 2/9 and 2/9. All the partners have decided to change profit and loss sharing ratio to 2/9, 3/9 and 4/9. New share दिया है 2/9, 3/9 and 4/9. From these information, find out what sacrifice has been made by which partner using sacrificing formula. Sum number 8 is same as sum number 7, तो वो आप देख लेना. Now we start sum number 9. Praveen, Mahendra and Arvind are partners of the firm. Old ratio is 5:2:2, 5/9, 2/9 and 2/9. All the partners have decided to change profit and loss sharing ratio to 2/9, 3/9 and 4/9. New share दिया है 2/9, 3/9 and 4/9. From these information, find out what sacrifice has been made by which partner using sacrificing formula. 3 partners, Praveen, Mahendra and Arvind. Old share 5/9, 2/9 and 2/9. New share 2/9, 3/9 and 4/9. Sacrificing ratio is equal to old share minus new share. Praveen's share old share है 5/9 minus new share 2/9. Here बेस सेम है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है. 5 minus 2 3/9. महेंद्रा 2/9 minus 3/9. 2 minus 3 minus 1/9. सेक्रीफाइसिंग रेशियो में माइनस में आंसर आया तो वो क्या है, गेन. एंड अरविंद शेयर 2/9 minus 4/9. 2 minus 4 minus 2/9. एंड अरविंद्स गेन इज 2/9. Sacrifice of Praveen is 3/9. Gain of Mahendra is 1/9 and gain of Arvind is 2/9.